is from your chapter number 3 the application control framework और उस application control framework में से एक database control का topic है and what are the various points considered under the database controls topic. You have your access control, integrity control, application software control, concurrency control, cryptographic control, file handling control and audit trail control. So what are basically the database controls are used within an application software to maintain. क्या करना ये यूज़ किए जाते हैं within an application software ताकि वो maintain कर पाए integrity of the data, to prevent integrity violations when multiple programs have concurrent access to data, and the ways in which data privacy can be preserved within the database subsystem. तो इसके लिए database controls लगाए जाते हैं. So I hope it is clear what are the points included in database control under the application control framework. Access control, integrity control, application software control, concurrency control, cryptographic control, file handling control and your audit trail control. So we'll discuss one by one each and everything, right? So these controls are used within an application software. कहाँ पे ये controls लगाए जाते हैं application software में to maintain the integrity of the data, to prevent integrity violations when multiple programs have concurrent access to data, and the ways in which data privacy can be preserved within the database subsystem. So first one is access controls. These controls in the database system, जो database system होता है उसके अंदर जो controls होते हैं वे सीख करते हैं to prevent unauthorized access to and use of the data. To prevent unauthorized access to and use of data, a security policy has to be specified, followed by choosing an access control mechanism that will enforce the policy chosen. If the database is replicated, the same access control rules must be enforced by access control mechanism at each site. Next is integrity control. These are required to ensure that the accuracy, completeness and uniqueness of instances used within the data or conceptual modeling are maintained. तो integrity accuracy, completeness, uniqueness of instances used within the data or conceptual modeling are maintained. तो सब ये सारे चीज़ें maintain होने चाहिए. Integrity constraints are established to specify the type of relationship and consistency among rows in relationships. So integrity constraints are established to specify the type of relationship and consistency among rows in relationship. Next is application software controls. When application software acts as an interface to interact between the user and the database. क्या बोल रहा है? जब एक application software acts as an interface between the user and the database, the database management system depends, जो database management system है वो depend करता है application software पे to pass across a correct sequence of commands and update parameters so that appropriate actions can be taken when certain types of exception condition arise. This is achieved through update controls. ये achieve होता है through the update controls that ensure that the changes to the database reflect changes to the real world entities and association between entities that data in the database is supposed to prevent. Report controls that identify errors or regularities that may have occurred when the database have been updated. तो यहाँ पे update controls क्या बोलते हैं? Ensure that changes to the database reflect changes to the real world entities and associations between entities that the data in the database is supposed to represent, and report controls that identify errors or irregularities that may have occurred when the database has been updated. Concurrency controls क्या होते हैं? These are required to address the situation that arises due to simultaneous access to the same database or due to the deadlock. जब simultaneous access to the same database or due to the deadlock हो जाता है, they are required to address the situation that arises. Concurrency controls are required to address the situation that arises due to simultaneous access to the same database or due to deadlock. Next is cryptographic controls. These controls can also be well used for protecting the integrity of the data stored in the database using block encryption. तो cryptographic controls क्या बोलता है? प्रोटेक्ट करता है integrity of data stored in database using block encryption. फाइल हैंडलिंग कंट्रोल्स को यूज़ किया जाता है ताकि वो प्रिवेंट कर पाए accidental destruction of data
contained on a storage medium. Accidental destruction, file handling controls क्या करता है, prevent करता है accidental destruction of data contained on a storage medium. These are exercised by hardware, software and the operators or users who load or unload storage मीडिया. ऑडिट ट्रेल कंट्रोल्स क्या मेंटेन करता है, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स को मेंटेन करता है दैट अकर्स एदर टू द डेटाबेस डेफिनेशन और द डेटाबेस इटसेल्फ. अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल क्या होगा एंड ऑपरेशन का ऑडिट ट्रेल क्या होगा. अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल में आप क्या डिस्कस इंक्लूड करेगा, वो डेटा आइटम्स जो कंफर्म करते हैं कि क्या एप्लीकेशन प्रॉपरली एक्सेप्ट प्रोसेस स्टोर करता है इंफॉर्मेशन ताकि वो अटैच कर पाए यूनिक टाइम स्टैम्प टू ऑल ट्रांजैक्शन, ताकि वो अटैच कर पाए बिफोर इमेजेस एंड आफ्टर इमेजेस ऑफ द डेटा आइटम ऑन विच ट्रांजैक्शन इज अप्लाइड टू द ऑडिट ट्रेल. अगर कोई मॉडिफिकेशन या करेक्शन हुए हैं टू द ऑडिट ट्रेल ट्रांजैक्शन अकोमोडेटिंग द चेंजेस दैट अकर विद इन द एप्लीकेशन सिस्टम and not to only test the stated input calculation and output rules for data integrity but should also assess the efficacy of the rules themselves. ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल में क्या डिस्कस करोगे, दिस मेंटेन्स द क्रोनोलॉजी ऑफ रिसोर्स कंजम्पशन इवेंट्स दैट अफेक्ट्स द डेटाबेस डेफिनेशन और द डेटाबेस. दिस मेंटेन्स अ क्रोनोलॉजी ऑफ resource consumption events that affects the database definition or the database. So this is all about your database controls, access controls, integrity controls, application software control, concurrency control, cryptographic control, file handling control and your audit trail. In this video we will be discussing about the output controls related to the application control framework. Yeah, the output controls में as you can see you have an inference control, batch output production and distribution controls, batch report design controls, online output production and distribution controls and audit trail controls. Yeah, so these are all your output controls: inference controls, batch output production and distribution controls, online output production and distribution controls, batch report design controls and audit trail controls. उसमें से online output production and distribution controls है ना, they are further segregated into सोर्स, किस सोर्स पे हमें ये जो आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो रखना चाहिए. सो सोर्स कंट्रोल, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल्स, फिर कम्युनिकेशन कंट्रोल्स, receipt controls, review control, disposition controls, retention controls and your deletion controls. So what are the controls involved in online output production and distribution? What are the controls involved in online output production and distribution? Source control, distribution control, communication control, receipt control, review control, disposition control, retention control or deletion control. Again, source, distribution, communication, receipt, review, disposition, retention and deletion, right? नेक्स्ट इज योर बैच आउटपुट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करो. जब आप बैच प्रोवाइड, जब आप प्रिंटर पे जब आप रिपोर्ट जो भी डेटा प्रिंट देते हो तो वो अभी अब बैच प्रोडक्शन हुआ है तो आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे. एंड रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड इट वुड बी योर रिपोर्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कर, जो आप रिपोर्ट प्रोग्राम है वो उसका एग्जीक्यूशन कंट्रोल्स. एंड देन इट इज स्पूलिंग फाइल कंट्रोल, प्रिंटिंग कंट्रोल, ये हो गए प्रोडक्शन के रिलेटेड. ठीक है, रिपोर्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंट्रोल, स्पूलिंग फाइल कंट्रोल, प्रिंटिंग कंट्रोल. और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड रिपोर्ट कलेक्शन कंट्रोल, यूजर और क्लाइंट सर्विस रिव्यू कंट्रोल, रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, यूजर आउटपुट कंट्रोल, स्टोरेज कंट्रोल, रिटेंशन एंड डिस्ट्रक्शन कंट्रोल. रिटेंशन एंड डिस्ट्रक्शन कंट्रोल सो इधर भी है, राइट. ओके, सो under batch output production and distribution controls you have report program execution control, spooling file control, printing control, report collection controls, user or service client service review control, report distribution control, user output control, storage करेंगे, retain करेंगे, destruct करेंगे. ठीक है, output देने के बाद storage करेंगे, retention करेंगे, destruction करेंगे. So these are your output related controls which we will discuss one by one. Talking about your output controls, inference controls क्या होता है.
इनको यूज़ पहले तो आउटपुट कंट्रोल्स क्या होता है, ये कंट्रोल इंश्योर करते हैं कि जो डेटा है ना वो डिलीवर्ड है टू द यूजर्स, डिलीवर्ड जो डेटा जो यूजर्स को डिलीवर्ड है वो प्रेजेंटेड फॉर्मेटेड है और डिलीवर्ड है इन अ कंसिस्टेंट एंड सिक्योर्ड मैनर। आउटपुट है ना कोई भी फॉर्म में हो सकता है, इट कैन बी ईदर अ प्रिंटेड डेटा रिपोर्ट और अ डेटाबेस फाइल इन अ रिमूवेबल मीडिया। तो पहला कंट्रोल इन द आउटपुट कंट्रोल इज योर इन्फरेंस कंट्रोल, ताकि ये कंट्रोल लगाए जाते हैं टू प्रिवेंट कॉम्प्रोमाइज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटाबेस, या किसके लिए, टू प्रिवेंट कॉम्प्रोमाइज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटाबेस फ्रॉम विच यूजर्स कैन obtain only aggregate statistics rather than the values of individual data items. These are restriction controls. These are restriction controls which limit the set of responses provided to the users to try to protect the confidentiality of data about persons in the database. So inference controls क्या होते हैं? These are used to prevent compromise of statistical database from which users can obtain only aggregate statistics rather than the value of individual data items. These are restriction controls which limit, ये restriction controls है जो limit करते हैं the set of responses provided to the users to try to protect the confidentiality of data about persons in the database. Next, as we discussed, batch output production and distribution controls में you have report program execution control, spooling file control, printing control, report collection control, user or client service review control, report distribution control, user output control, storage retention and distraction control. So batch output production and distribution controls में क्या discuss किया गया है? Batch output is in the form of tables हो सकता है, ग्राफ्स हो सकता है या इमेजेस होता है, इज प्रोड्यूस्ड एट सम ऑपरेशन फैसिलिटी, कुछ ऑपरेशन फैसिलिटी पे ये प्रोड्यूस किए जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं टू द यूजर्स ऑफ द आउटपुट. दिस इंक्लूड सेवरल कंट्रोल्स लाइक रिपोर्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंट्रोल्स. ये क्या इंश्योर करते हैं? ये इंश्योर करते हैं कि ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स आर परमिटेड टू एग्जीक्यूट बैच रिपोर्ट प्रोग्राम्स एंड दीज इवेंट्स आर लॉग्ड एंड मॉनिटर्ड. तो रिपोर्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंट्रोल में क्या था? इंश्योर करते दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स आर परमिटेड टू एग्जीक्यूट बैच रिपोर्ट प्रोग्राम्स एंड दीज इवेंट्स आर लॉग्ड एंड मॉनिटर्ड. स्पूलिंग फाइल कंट्रोल सो दैट द यूजर्स कैन कंटिन्यू वर्किंग while a queue of documents waiting to be printed on a particular printer to ensure that waiting files to get printed shall not be subject to unauthorized modification. तो spooling file controls क्या होता है? So that users can continue working while a queue of documents waiting to be printed on a particular printer to ensure that waiting files to get printed shall not be subject to unauthorized modification. अभी printing control क्या होता है, right? नेक्स्ट इज योर प्रिंटिंग कंट्रोल. इंश्योर करता है कि जो आउटपुट है इज मेड ऑन द करेक्ट प्रिंटर एंड अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर टू द प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस. प्रिंट है ना, आउटपुट है ना, वो करेक्ट प्रिंटर पे प्रिंट होना चाहिए और अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस. रिपोर्ट कलेक्शन कंट्रोल में क्या है? टू एंश्योर दैट द रिपोर्ट इज कलेक्टेड इमीडिएटली एंड सिक्योर्ड टू अवॉइड unauthorized disclosure and data leakage. So report collection control, report is collected immediately and to secure to avoid unauthorized disclosure and data leakage. Next is user or client service review control. To ensure that user should obtain higher quality output and detection of errors and irregularities in output. So रिव्यू कंट्रोल में क्या करता है कि यूज़र ऑब्टेन करेगा हाई क्वालिटी आउटपुट एंड डिटेक्शन ऑफ द एरर्स और इरेगुलरिटीज इन आउटपुट. रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर दैट द टाइम गैप बिटवीन द जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट्स इज reduced and a log is maintained for reports that were generated and to whom these were distributed. Next is user output controls to be placed to ensure that users review output on a timely basis. User review output on a timely basis. So this is user output control कि user ना review करे वो output on a timely basis. Storage control to ensure that proper perseverance of output in an ideal environment. Secured storage of output and appropriate inventory controls over the stored output. स्टोरेज कंट्रोल्स क्या करें? प्रॉपर परसिवियरेंस होना चाहिए ऑफ आउटपुट एक आइडियल एनवायरनमेंट में. सिक्योर्ड आउटपुट storage of output and appropriate inventory controls over the stored output. Next is retention and distraction controls in terms of deciding the time duration for which output shall be retained and then destroyed when not required. So this is batch output production and distribution controls. Batch report design controls में क्या है? Batch report design features should comply with the
control procedures laid down for them during the output process. The information incorporated in a well-designed batch report shall facilitate its flow through the output process and execution of the controls. Next, you have online output production and distribution controls. It deals with controls to be considered. वो controls जो भी considered किए जाने at various phases like establishing the output at the source, distribution, communicating, receiving, viewing, retaining, and destructing the output. So first one is source controls. Ensure that output which can be generated or accessed online is authorized, complete, and timely. Distribution controls to prevent unauthorized copying of online output when it was distributed to a terminal. What distribution control क्या करता है? Prevent करता है unauthorized copying of online output when it was distributed to a terminal. Communication control to reduce exposures from attacks during transmission. Communication controls क्या करता है? Reduce करता है exposures from attacks during transmission. Receipt controls to evaluate whether the output should be accepted or rejected. Review controls to ensure the timely action of intended recipients on the output. Disposition controls to educate employees the actions that can be taken on the online output they receive. Retention controls to evaluate for how long the output is to be retained, and deletion controls to delete the output once expired. So these are online output production and distribution control. Next is audit trail control. क्या करता है? Maintain करता है chronology of events that occur from the time the content of output is determined until the time the user complete their disposal of output, but it no longer should be retained. Accounting में audit trail में क्या होता है? This includes output was assimilated for presentation to the users, what output was presented to the users, who received the output, when the output was received, what actions were subsequently taken with the output. Operation audit trail में क्या ये एक record maintain करते हैं of resources consumed by the components in the output subsystem to assimilate, produce, redistribute, use, store and dispose various types of outputs like graphs, images, etc. Record करता है data जो enable करता है printing के times, response के time, display rates for output to be determined, and to manage the information that enables the organization to improve the timeliness of the output production and reduce the number of resources consumed in the producing output. So this is all about your output control. I hope it is clear. Inference control, batch output production and distribution controls, batch report design controls, online output production and distribution controls, and your audit trail controls. Online output production में क्या होगा? Source, distribution, communication, receipt, review, disposition, retention and deletion. Batch में क्या होगा? Report program execution, spooling file, printing control, report collection, report distribution, user output, storage, retention and destruction, and user or client service review control. So these are all about your output. We will discuss about communication control. Communication control में क्या होता है? There are a lot of communication controls, जैसे कि पहला तो line flow, line error flow link topo, line error flow link topo, line error flow link topo. So communication control में line error control, flow control, link control, topological कंट्रोल. ठीक है, फिर कम्युनिकेशन के लिए मैं कौन सा चैनल पे आ रहा है रे, कौन सा चैनल है बोलना, तो चैनल एक्सेस कंट्रोल. इंटरनेट कौन सा कनेक्टेड है, जियो, एयरटेल, क्या, सो इंटरनेट वर्किंग कंट्रोल, राइट. नेक्स्ट यू हैव कंट्रोल ओवर सबवर्सिव थ्रेट, ऑडिट ट्रेल कंट्रोल्स एंड योर फिजिकल कॉम्पोनेंट कंट्रोल. सो व्हाट आर द कम्युनिकेशन कंट्रोल्स? Physical component control, line error control, flow control, link control, topological control, channel access control, controls over subversive threats, internet working controls, and then you have your audit trails. Now discussing them in detail. Communication controls. They discuss exposures and communication subsystem, controls over physical components. वो सारे चीज़ें पैराग्राफ में लिखे गए हैं. तो what is physical component control? एक communication subsystem में क्या होता है ना, the physical components ना shall have the characteristics that make them reliable and incorporate features and controls that mitigate करेंगे possible effects of exposure. तो इंग्लिश से भारी इंग्लिश लिखी है कि क्या बोले, फिजिकल कंपोनेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होने चाहिए जो रिलायबल हो और इनकॉर्पोरेट करे फीचर्स और कंट्रोल्स जो मिटिगेट करेंगे द पॉसिबल effects of exposure. Major physical components that affect the reliability of communication subsystem. Major physical components that affect the reliability of communication subsystem are transmission media, communication lines, modem, post protection devices, multiplexes, concentrators, etc. Yeah. So what did I say?
Major physical components that affect the reliability of communication subsystem are transmission media, communication lines, modem, post protection devices, multiplexes, concentrators, etc. लाइन एरर कंट्रोल क्या होता है? जब भी डेटा ट्रांसमिट किया जाता है ओवर अ कम्युनिकेशन लाइन, इट कैन बी रिसीव्ड इन एरर बिकॉज ऑफ attenuation, distortion or noise that occurs in, and this errors must be detected and corrected. तो जब भी डेटा ट्रांसमिट होता है एक कम्युनिकेशन लाइन में एरर, इट कैन बी रिसीव्ड इन एरर बिकॉज ऑफ attenuation, distortion or noise that occurs on the line. These errors must be detected and corrected. फ्लो कंट्रोल क्या होता है? फ्लो कंट्रोल आर नीडेड बिकॉज दो कंप्यूटर जो होते हैं, टू नोड्स इन अ नेटवर्क, कैन डिफर इन टर्म्स ऑफ रेट at which they can be sent, receive and process data. For example, data transmission between mainframe and microcomputers may become erroneous because of the difference in their speed and storage capacity. Flow controls will be used therefore to prevent the mainframe flooding the microcomputer and as a result data being lost. तो ऐसे flow controls आपको रखने पड़ेंगे. लिंक कंट्रोल्स, जैसे कि हमारे वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, जो लाइन एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल, उसमें लाइन एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल आर इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द कंपोनेंट दैट मैनेजेस द लिंक between two nodes in a network. The way the link management components operate is specified via a protocol. Very important. टोपोलॉजिकल कंप्यूटर्स MCQ में आ सकता है. टोपोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है? ये एक कम्युनिकेशन नेटवर्क टोपोलॉजी है. ये एक कम्युनिकेशन नेटवर्क टोपोलॉजी है जो स्पेसिफाई करते हैं द लोकेशन ऑफ नोड्स विद इन अ नेटवर्क. स्पेसिफाई करते हैं द लोकेशन ऑफ नोड्स विद इन अ नेटवर्क, द वेज इन विच these nodes will be linked, the data transmission capabilities of the link between the nodes. The network must be available for use at any one time by a given number of users that may require alternative hardware, software or routing of messages. तो क्या बोला मैंने? टोपोलॉजिकल कंट्रोल्स क्या होता है? ये एक कम्युनिकेशन नेटवर्क टोपोलॉजी है जो स्पेसिफाई करते हैं द लोकेशन ऑफ नोड्स विद इन अ नेटवर्क, द वे इन विच दीज नोड्स विल बी लिंक्ड एंड द डेटा ट्रांसमिशन कैपेबिलिटीज ऑफ द लिंक्स बिटवीन द नोड्स. द नेटवर्क मस्ट बी अवेलेबल फॉर यूज एट एनी वन टाइम बाय अ गिवन नंबर ऑफ यूजर्स दैट may require alternative hardware, software or routing of messages. Next is channel access controls. Two different nodes in a network can compete to use a communication channel simultaneously, leading to the possibility of contention of the channel existing. Therefore, some type of channel control techniques like polling method or contention method must be used. A polling method क्या होता है? Defining an order in which a node can gain access to channel capacity. Order define करता है कि कौन सा gain कब वो चैनल को एक्सेस कर पाएगा. सो दैट इज पॉलिंग मेथड. कंटेंशन मेथड क्या होता है? नोड्स इन अ नेटवर्क मस्ट compete with each other to gain access to the channel. तो contention method में nodes in a network must compete with each other to gain access to the channel. So these are the channel access controls. Next is controls over subversive threats. Firstly, the physical barriers are needed to be established to the data traversing into the subsystem. Secondly, in case the introducer has somehow gained access to the data needs to be rendered useless when access occurs. So these are controls over subversive threats. पहले physical barriers लगाओ, अगर फिर भी intruder आ जाते उसको वो data दो जो useless होगा. Next is inter-networking controls. Different networking devices, internet working devices like bridge, router, gateways are used to establish connectivity between the homogeneous or heterogeneous network. Therefore, several control functions in terms of access control mechanisms, security and reliability of networks are required to be established. So these are internet working controls. Audit trail controls में क्या होता है? वो chronology of events मेंटेन करते हैं फ्रॉम द टाइम अ सेंडर डिस्पैचेस अ मैसेज टू द टाइम अ रिसीवर ऑब्टेन्स द मैसेज. और ऑडिट कंट्रोल्स में अगेन यू हैव अकाउंटिंग ऑडिट कंट्रोल एंड ऑपरेशन ऑडिट कंट्रोल. You can give it a self-reading later. So these are all your communication controls. Again, just a revision: physical component control, line error control, flow control, link control, topological control, channel access control, control over subversive threats, internet working controls, and your audit trail. Now we will discuss each and everything about input control check. Input control check is divided into
डेटा जब कोड करते हो तो डेटा कोड कंट्रोल, फिर बैच कंट्रोल, वैलिडेशन ऑफ डेटा इनपुट कंट्रोल एंड योर ऑडिट ट्रेल कंट्रोल. So what is input control? You have data code control, batch control, validation of data input control and your audit trail control. So let's discuss each and everything. First is data code control. ये data code controls है ना, aimed है at reducing the user error during data feeding. Aimed at reducing user error during data feeding. There are two types of errors, that is transcription and transposition errors can corrupt a data code and cause processing errors. तो डेटा को करप्ट, डेटा कोड को कैसे करप्ट कर सकते हैं? Transcription and transposition errors. Any of these errors can cause serious problems in data processing if they go undetected. Transcription errors is a special type of data entry error that is commonly made by human operators or by optical character recognition programs, OCR programs, right? Optimal character recognition programs. ट्रांसक्रिप्शन एरर की बात जब मैं कर रही हूँ, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डेटा एंट्री एरर है जो कि कॉमनली मेड बाय ह्यूमन ऑपरेटर्स और OCR प्रोग्राम, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन. और वो भी फर्दर दे कैन बी एदर योर एडिशन एरर, ट्रंकेशन एरर और सब्सटीट्यूशन एरर. Addition errors, truncation errors and substitution errors. Addition errors when an extra digit is added to a code. Truncation error when a digit is removed from the code, and substitution errors, replacement of a digit in a code with another. Transposition error, it is a simple error of data entry that occurs when two digits that are either individual or part of a larger sequence of numbers are reversed when posting a transaction. For example, sales order of this and this is transferred to this and this will be posted by the wrong customer's account. A similar error in the inventory item code can on the purchase order could result in ordering unneeded inventory and failing to order inventory that is needed. So I hope it is clear what is data code control, transcription error and transposition errors. ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डेटा एंट्री एरर मेड बाय ह्यूमन ऑपरेटर्स और बाय ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन प्रोग्राम्स होता है. नेक्स्ट इज योर बैच कंट्रोल्स. Batching is a process of grouping together transactions that bear some type of relationship to each other. Various controls can be exercised over a batch to prevent or detect errors or irregularities. To identify errors or irregularities in either physical or logical batch, three types of controls are there. Financial controls, hash totals and document or record counts. फाइनेंशियल कंट्रोल टोटल्स में क्या होता है? ग्रैंड टोटल जो होना है कैलकुलेटेड फॉर ईच फील्ड कंटेनिंग मॉनेटरी अमाउंट. ग्रैंड टोटल कैलकुलेट की जाती है फॉर ईच फील्ड कंटेनिंग द मॉनेटरी अमाउंट. फॉर एग्जांपल, द टोटल सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डेट टोटल यूजिंग DA, TA, हाउस डायरेक्ट अलाउंस, टोटल अलाउंस, हाउस अलाउंस, मेडिकल एंड प्रोविडेंट फंड. बेसिकली टोटल. हैश टोटल क्या होता है? ग्रैंड टोटल द कैलकुलेटेड फॉर एनी कोड ऑन अ डॉक्यूमेंट इन अ बैच. एग्जाम्पल, द सोर्स डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर्स कैन बी, सीरियल नंबर्स को टोटल किया जाता है, राइट? सो ग्रैंड totals calculated for any code on a document in a batch is your hash totals. Document or record counts, grand totals for number of documents and records in a batch. Next is validation of data input control. Input validation controls are intended to detect errors in the transaction data before the data are processed. Data process होने से पहले ट्रांजैक्शन डेटा में क्या एरर्स है वो डिटेक्ट करने का काम है वैलिडेशन ऑफ डेटा इनपुट कंट्रोल्स. These errors need to be corrected. If not corrected, the same should be returned immediately to an error file. जैसे कि field check. It involves a program procedures that examine the characteristics of the data in the field. ये program procedures है जो examine करते हैं the characteristics of data in the field. It could be your limit check against predefined limits. Picture check against entry into processing of incorrect or invalid characters, and then valid check notes against predetermined transaction codes, tables, etc. So again, what is limit check? Limit check is made against predefined limits. Picture check किया जाता है against entry into processing of incorrect or invalid characters. Valid check codes क्यों होते हैं? अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड ट्रांजैक्शन कोड एंड टेबल्स. रिकॉर्ड चेक में यू हैव रीजनेबलनेस चेक फॉर वेदर द वैल्यू स्पेसिफाइड इन द फील्ड इज रीजनेबल फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड और नॉट. वैलिड साइन टू डिटरमाइन विच साइड इज वैलिड फॉर अ न्यूमेरिक फील्ड, एंड सीक्वेंस चेक टू फॉलो रिक्वायर्ड ऑर्डर मैचिंग विद लॉजिकल records. Next you have batch check. This includes checks like transaction type. If all
input records in a batch are of a particular type, and sequence check if input records are in a particular order or not. File check, this includes files, version, usage, internal and external labeling, data file security, file updating and maintenance authorization, etc. Next, you have audit trail controls. This maintains the chronology of events from the time data and instructions were captured and entered into the application system until the time they were deemed valid and passed on to other subsystems within the application system. So this is all about your input controls. So don't forget, जो हमारे input controls में you have data code controls. Data code controls में transposition errors and transcription error. Transcription error में you have addition error, truncation error and substitution error. Batch control में financial total, hash total and document or record count. Validation of data input में field check, record check, batch check, file check. Field check, record check, batch check, file check. Field check में limit check, picture check, value check, codes. Record check में reasonableness check, valid chain, sequence check. Batch check में transaction type and your sequence check. So this is all about your input processing control. Processing control में processor controls are just which is further divided into few controls. Then you have your रियल मेमोरी का कंट्रोल, वर्चुअल मेमोरी का कंट्रोल, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कंट्रोल. तो प्रोसेसिंग कंट्रोल में यू हैव प्रोसेसर कंट्रोल, रियल मेमोरी कंट्रोल, वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल एंड योर ऑडिट ट्रेल कंट्रोल. देन बाउंड्री कंट्रोल्स में यू हैव क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिजिटल सिग्नेचर, प्लास्टिक कार्ड. सो बाउंड्री किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंदर जाने से रोकना, दैट इज योर बाउंड्री कंट्रोल. इट इज अगेन योर क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, पिन, डिजिटल सिग्नेचर, प्लास्टिक कार्ड्स एंड योर ऑडिट ट्रेल कंट्रोल. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. बाउंड्री कंट्रोल्स में यू फर्स्ट हैव योर this major control of the boundary system are the access control mechanism that links the authentic users to the authorized resources they are permitted to access. The boundary subsystem establishes the interface between would-be user of a computer system and the computer itself. Major controls of the boundary subsystem are as follows. You have first is your cryptographic controls. Cryptographic controls में क्या होता है? These are designed to protect the privacy of the data and prevent unauthorized modification of data by scrambling data. These deals with programs for transforming data into ciphertext. Transform data करना into ciphertext that are meaningless to anyone who does not possess the authentication to access the respect system, resource or file. A cryptographic technique transforms data into cryptograms. A cryptographic technique transforms data into cryptograms and its strength depends on the time and cost to decipher the ciphertext by a crypt analyst, right? Three techniques of cryptographic that are used are transposition, that is permute the order of characters, substitution, replace the text with the key text, and product cipher, that is combination of substitution and transposition. So the three techniques of cryptography that are used are transposition, substitution and your product cipher. Next is access controls. These controls restrict the use of computer system resources to authorized users, limit the actions authorized users can take with these resources, and ensure that users obtain only authentic computer system resources. The access control mechanism involves three steps, that is identification, authentication and authorization. क्या बोला मैंने इधर? जो access control mechanism है, आ सकता है एग्जाम में. access control mechanism में 3 steps होते हैं. access control mechanism में 3 steps होते हैं, that is your identification, authentication and authorization. Identification, authentication and authorization. User's identification is done by user itself by providing his or her unique user ID allotted to him or account number. Authentication mechanism क्या होता है? Is used for proving. Authentication prove करता है the identity with the help of a password which may involve personal characteristics like name, birth, employee code, designation or a combination of 2 or more of these. Biometric identification including thumb or finger
impression, eye, retina, etc., and information stored in identification cards can also be used in a authentication process, that is proving the identity. That is authorization, refers to a set of actions allowed to a user once authentication is done successfully. For example, read, write, print, etc., permissions allowed to an individual user. An access control mechanism is used to enforce an access control policy, which are mainly of two types, that is discretionary access control and your mandatory access control. Discretionary access controls and your mandatory access controls. Next is personal identification number. Renumbered information used to authenticate users, like verification of customers in electronic fund transfer system. Pin क्या होता है? It is like a password assigned to a user by an institution, a random number stored in the database dependent to the user identification detail. Several phases, एग्जाम में आ सकता है, क्या phases होते हैं of the life cycle of a personal identification number. Several phases of life cycle of PIN includes the steps that are generation of the PIN, issuance and delivery of the PIN, validation of the PIN upon the entry at the terminal device, transmission of the PIN across communication line, processing of the PIN, storage of the PIN, change of PIN, replacement of PIN, and termination of PIN. A PIN may be exposed to vulnerabilities at any stage of life cycle of PIN, and therefore controls need to be put in place and working to reduce the exposures to an accepted level. So what are the phases in life cycle? पहले तो generate करना, फिर issue करना, फिर validate करना, फिर transmission करना, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, चेंज, रिप्लेसमेंट एंड टर्मिनेशन. डिजिटल सिग्नेचर्स क्या करता है? एस्टैब्लिश करता है डिजिटल सिग्नल द ऑथेंटिसिटी ऑफ पर्सन एंड प्रिवेंटिंग द डिनायल ऑफ message or contracts are critical requirements when the data is exchanged in electronic form. Establishing the authenticity of a person and preventing the denial of a message or contract are critical requirement when data is exchanged in electronic form. A counterpart known as digital signature. क्या बोला मैंने? A counterpart known as digital signature is used as an analog signature for such e-documents. Digital signatures are not constant like analog signature. They vary across messages and cannot be forged. Plastic cards, we may recall that while PIN and digital signatures are used for authentication purposes, plastic cards are used primarily for identification purpose. This includes the phases, namely application of a card, preparation of a card, issue of a card, use of a card, and return and or card termination. Audit trail control may maintain the chronology of events that occurs when a user attempt to gain access to an employee system resources. Next, discussing about the processor controls. Processing controls, we have first one is as processor controls. These controls reduce the expected losses from errors and irregularities associated with the central processor. जैसे कि पहले error को detection and correction, then multiple execution states, timing control, component replication. Then you have real memory control. This comprises fixed amount of primary storage in which programs or data must reside for them to be executed or referenced by the central processor. Real memory controls seek to detect and correct errors that occur in memory cells and to protect areas of memory assigned to the program from illegal access by another program. Virtual memory controls, imaginary memory, exist when the addressable storage space is larger than the available real memory space. To achieve this outcome, a control mechanism must be in place that maps virtual memory addresses into real memory addresses. When an executing program references virtual memory addresses, the mechanism then translates these addresses into real memory addresses. Application software controls, these perform validation checks to identify the errors during the processing of data. They are required to ensure both the completeness and accuracy of data being processed. Normally, the processing controls are enforced through database management system that stores the data. However, adequate control should be enforced through the front-end application system also to have consistency in the control process. Audit trail control means this maintains the chronology of events from the time the data is received from the input or communication subsystem to the time the data is dispatched to the database communication or output subsystem. So this is all about your application control framework to
Summarize again. In boundary controls, you have cryptographic controls, access controls, personal identification numbers, digital signatures, plastic cards, and audit trail controls. Input controls mein you have data code control, batch controls, validation of data input control, and audit trail. Data code control में transposition error, transcription error. Batch controls में financial totals, hash totals, or document or record. Validation of data input control में field check, record check, batch check, file check. Field check में limit check, picture check, valid check codes. Record check में is reasonableness check, valid sign and sequence check, transaction type and sequence check. Processing में you have processor, real memory, virtual memory, application software, audit trail. Communication में फ्लो करेंगे, लिंक करेंगे, टोपो करेंगे, लाइन एरर कंट्रोल, फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल, चैनल एक्सेस कंट्रोल, कंट्रोल ओवर सबवर्सिव थ्रेट्स, इंटरनेट वर्किंग कंट्रोल एंड योर ऑडिट ट्रेल कंट्रोल. डेटाबेस कंट्रोल में एक्सेस कंट्रोल, इंटीग्रिटी कंट्रोल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल, कॉन्करेंसी कंट्रोल, क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल, फाइल हैंडलिंग कंट्रोल एंड योर ऑडिट ट्रेल कंट्रोल. आउटपुट कंट्रोल में इन्फ्रेंस कंट्रोल, बैच आउटपुट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, बैच रिपोर्ट डिजाइन कंट्रोल, ऑनलाइन आउटपुट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल एंड ऑडिट ट्रेल कंट्रोल. बैच आउटपुट में क्या क्या है? रिपोर्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंट्रोल, स्पूलिंग फाइल कंट्रोल, प्रिंटिंग कंट्रोल, रिपोर्ट कलेक्शन कंट्रोल, यूजर और क्लाइंट सर्विस रिव्यू कंट्रोल, रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, यूजर आउटपुट कंट्रोल, स्टोरेज कंट्रोल, रिटेंशन एंड डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल. ऑनलाइन आउटपुट प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल में यू आर सोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिकेशन, रिसिप्ट, रिव्यू, डिस्पोजिशन, रिटेंशन एंड डिलीशन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर एप्लीकेशन कंट्रोल फ्रेमवर्क.